So it is not the actual implementation. In business plan, we just visualize the future scenario of the business, किस प्रकार से हमें आगे प्रोसीड करना है, किस प्रकार के हमारे प्रोजेक्शंस होंगे और किस प्रकार से हम डिसीजंस देंगे ताकि यथार्थ में या व्यवहारिक रूप से उसी के अनुरूप कार्य किया जाए. So that is very important that we should develop a blueprint before starting a business. Now the question arises that why it is essential to develop business plan. In fact, न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए लेकिन किसी भी बिजनेस प्लान की आवश्यकता बहुत सारे कारणों से पड़ती है. In fact, what are the tasks of developing any business plan? Just see. The first one is we can identify the innovative ideas. In fact, यदि हम उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहाँ की वर्तमान में और उद्यम भी कार्य कर रहे हैं, तो शायद हमारे लिए एक लीडरशिप पोजीशन को एक्वायर करना मुश्किल होगा. बिजनेस प्लान का पर्पस यह है कि इनोवेटिव आइडियाज को आइडेंटिफाई किया जाए. व्यवसाय के अवसरों को आइडेंटिफाई किया जाए, नए विचारों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी व्यवहारिकता का विश्लेषण करके उन नए आइडियाज को एक बिजनेस प्रपोजल में ट्रांसलेट किया जाए. उसके लिए आवश्यक होगा कि हम डिटेल्ड बिजनेस प्लान डेवलप करें. सेकेंडली, रिसर्चिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एज यू नो कि किसी भी व्यवसाय के लिए स्वॉट एनालिसिस का किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है. स्वॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. बिजनेस प्लान के अंतर्गत हम व्यवसाय के लिए उपलब्ध अवसरों का आकलन करते हैं, संभावित जोखिमों या खतरों का भी विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ हम उस व्यवसाय को यथार्थ में बदलने के लिए हम कितने सक्षम या सशक्त हैं या हमारी कमजोरी क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करके उसे एक प्लान के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं. देन वी कैन असेस द फिजिबिलिटी ऑफ आइडियाज. विचार बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन शायद सारे विचार व्यवहारिक नहीं होते और जब तक कि उस विचार की दीर्घकाल के लिए अगर हम उसे लाभदायकता में बदल नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में उस विचार को क्रियान्वित करना संभव नहीं होता. थ्रू बिजनेस प्लान वी कैन असेस द फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया एंड देन इन ए बिजनेस प्लान वी कैन allocate द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर ताकि हम अपने लाभों को बढ़ा सकें. सो these are the 5 important tasks of any business plan: identifying the new ideas, identifying the opportunities, identifying the threats, assessing the strengths and weaknesses, and finally analyzing the feasibility or viability of that idea, and finally allocating the resources in a best possible manner. And for that it is very much essential to prepare any business plan. Now the question arises that what are the steps involved in developing any business plan? In fact, all the steps can be classified into these categories, 7 important categories. The first one is preliminary investigation. Secondly, idea generation. Number 3, environmental scanning. Number 4, feasibility analysis.
Number 5, that is drawing a functional plan. Number 6 is project report preparation, and lastly evaluation, review and control. These are the 7 important steps of developing any business plan. Now, one more question arises here, and the question is that once a business plan is developed, कौन-कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका संबंध बिजनेस प्लान से है? क्या बता सकते हैं कि कौन-कौन से पक्षकारों के लिए दैट बिजनेस प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न केवल उद्यमी के लिए लेकिन और स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस प्लान का प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. What you have to say? Who are the stakeholders in any business plan? Number 1, the bankers और the creditors. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है बैंकर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए, क्योंकि जब भी आप अप्रोच करते हैं लोन के लिए, दे विल ऑलवेज आस्क फॉर द योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, and that is always based on your business plan. Secondly, your suppliers and vendors, they are also interested particularly in a new business about your business plan. The third important thing is to seek various clearances, sanctions and approvals. Again, business plans are required. And similarly, sometimes our big vendors also want our business plan, that what exactly our business plans are. So I think business plan is very important, not only from the perspective of entrepreneur, but from other perspective also. It is very much essential to develop a strong business plan. So here the first important thing is preliminary investigation. इनफैक्ट बिजनेस प्लान को प्रारंभ करने से पूर्व ये अत्यंत आवश्यक है कि हम एक प्रारंभिक जांच पड़ताल करें कि हम किस प्रकार से आगे प्रोसीड करेंगे, एंड फॉर दैट वी कैन फर्स्ट डेवलप द or we can just study the available business plans in the similar line or in the similar area. That is, what are the available business plans. In fact, कोई ना कोई एक रेफरेंस या कोई ना कोई बेंचमार्क या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके आधार पर हम अपना बिजनेस प्लान डेवलप कर सकें. ये बिजनेस प्लान हम सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री का भी ले सकते हैं, या जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स और डेटा है उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन. अनलेस द आइडिया इज टोटली न्यू, if we belong to certain industry or if we are producing or rendering the same kind of services, then we can always see the available business plans. We are not saying that we should blindly follow the existing plans, but the existing business plans will always be helpful to us for developing our own business plan. So you can see here, yes. So on that basis, we can develop our business plan. That is, we can decide that what should be the benchmark for our business plan and investigate the available business plan in the similar industry or line. The second important thing is idea generation. That is also important, that we should develop the idea. In fact, किसी सेशन में आपकी बात हुई होगी विस्तार से कि किसी भी नए उद्यमी के लिए idea generation is very very important. Can you tell me that what are the sources of idea generation? What are the sources? कहाँ से आपको आइडियाज आ सकते हैं एक नए वेंचर को शुरू करने के लिए? Yes, very good. That is, if there is any problem persisting, यदि हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है
तो वह प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में वी कैन डेवलप सर्टेन आइडियाज. व्हाट एल्स? प्रॉब्लम इज वन. उसके अलावा कुछ और? नेसेसरी. हाँ, जरूरत पड़ने. जब वो तो आपकी प्रॉब्लम में आ गई कि आपको ज़रूरत है या आप नीड महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ की. सो ऑब्वियसली नीड. Market analysis is one that is taking the feedback from the prospects and the customer that what are the need of the market या customer किस प्रकार की expectations करते हैं. So taking the feedback from the customer or the prospect. What else? Newspapers can also provide you a lot of ideas because particularly the economic analysis or the economic page of the newspaper is a very good source of idea generation. Then the government policies and programs can also provide you certain ideas because government decides many times that what will be the future thrust area. What are those areas where the government will be providing a huge thrust in the years to come? What are those areas where new loans will be sanctioned on the priority basis? So the number of sources can be tapped to idea for idea generation. That is important. The third important source can be, this is the sources of idea. Brainstorming. What is brainstorming? Brainstorming. जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको लिख लेना. कैसे करेंगे सर? Brainstorming. I think in brainstorming what we do is that we invite बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं. जैसे इस ग्रुप में we can present a problem and on that basis in order to solve that problem what we can do, invite the ideas and on that basis we can develop certain new and novel idea to solve that kind of problem. So brainstorming is basically meeting of mind and certainly जब बहुत सारे लोग एक ही समस्या पर विचार कर रहे हैं तो बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा फिजिबल और वाइबल आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सिमिलरली द ग्रुप डिस्कशन, किसी प्रॉब्लम को अगर डिस्कस किया जाए ग्रुप में, in that case again lot of idea will be developed. Then data collection through the questionnaire, very popular source. प्रश्नावलियां भरा के रेस्पोंडेंट से on that basis we can get the suggestions and ideas. Similarly we can invite the ideas from the professionals also. जो इस क्षेत्र के experts हैं वो भी बहुत सारे ideas दे सकते हैं. Similarly market research can also be conducted. जैसे आपने कहा था market analysis. So you can do the market analysis and you can develop lot many ideas. And then यदि किन्हीं उत्पादों का आप विदेशों से आयात कर रहे हैं तो उस बेसिस पर कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में रेस्पॉन्सेस कैसा है, भारतीय परिस्थितियों में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, कैसे उन प्रोडक्ट्स को हम इंडिजिनस रूप से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट कैन बी ए गुड आइडिया. एंड देन कमर्शलाइजिंग द इनोवेशंस, जो भी इनोवेशंस हुए हैं, टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन बी वाइबल एंड कमर्शलाइज. ऑन दैट बेसिस lot many ideas can be developed. So after preliminary investigation, idea generation can be a very powerful source for starting any venture, and that can be the basis of business plan. And then environmental scanning is very important from the perspective of developing a business plan. And here the SWOT analysis is important कि जिस परिपेक्ष में या जिस वातावरण में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास क्या अवसर उपलब्ध हैं, क्या क्या संभावित जोखिम हैं, क्या क्या हमारे पास शक्तियाँ हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, कौन कौन से वीकनेस है. दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और हर बिजनेस प्लान में यू हैव टू डू द detailed environmental scanning in the form of that SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threats. That is the third important step in any business plan presentation.
And the fourth important thing here, what is the external environment? जब आप बात करते हैं external environment की, you want to find out the opportunities and threats, and here you will have to do the socio-economic appraisal. Ultimately, the products are to be supplied to the society and services are to be rendered to the society. जिन लोगों को आप अपना उत्पाद बेचेंगे, आइडिया आप सेल करेंगे, you will have to see their perspective and background. उत्पाद को बनाने के लिए क्या आपके पास sufficient technology and know-how है, और if it is not available, then can you import that technology? That has to be assessed on a price. किस प्रकार से आप वो टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करेंगे, that you will have to mention in your business plan proposal report also. The third important thing is that is economic appraisal. You will have to appraise that proposal from the economic perspective also. What is the current state of the affairs in economic environment? डिमांड सप्लाई पोजीशन किस प्रकार की है, मार्केट कितना है, साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, इन्फ्लेशन की रेट क्या है. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट हैज टू बी अप्राइज्ड. देन we'll have to see the demography also, what is the population, what is the age group, and what are the potential from that demographic point of view. And finally, government appraisal is also important. That is, what is the government policy, the industrial policy, the taxation policy, and the policy towards that particular industry. So it means that socio-economic background is important, then economic appraisal is important, technical appraisal is important, and finally we'll have to see the government perspective also. Perhaps when we start appraising all these, then we will be able to know about the strength and weakness of any organization. And then we'll have to see the internal environment of the organization, that is our own strengths and weakness, particularly for that particular product and services. That is, हमारे अपने रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंस कैसी है, हमारी मैन पावर कितनी कॉम्पिटेंट है, या हमारे एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे पास क्या पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेंथ है, दैट विल हैव टू सी. एंड इफ देयर आर एनी लिमिटेशंस और वीकनेसेस, हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम दैट लिमिटेशन और वीकनेस, that aspect has to be taken into consideration. So it means that in feasibility analysis, we'll have to see the external environment as well as the internal environment of the organization. And then we'll have to do the feasibility analysis also. Now here, the idea might be very novel one, very innovative one, but we will have to see its long-term sustainability also. हो सकता है कि वो आइडिया कुछ समय के लिए लाभदायक हो, लेकिन हमारा जो उद्यम है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है. साथ ही साथ हमें देखना होगा कि आइडिया अच्छा होने के बाद भी क्या उससे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है अथवा नहीं, whether it is feasible or not, particularly from the perspective of market. Idea is new, unique and novel one, but अगर उसकी आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते या वो आइडिया अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, in that case idea will not be feasible and viable. Similarly, idea might be new and novel one, but you are not having that technical know-how to implement that idea. You cannot produce in bulk, then it is not viable and feasible, and you'll have to see the finance part also. So you will have to carry the feasibility analysis in terms of market, in terms of technology, in terms of finance also.
As far as the market analysis is concerned, you will have to see that what are the prospects of the product. In fact, demand should always be growing and you should be able to cater that demand, number one. And secondly, you will have to calculate the perhaps what is the present affairs of the market. Market analysis is quite important to ensure that product is really viable and feasible. And then the financial analysis, again in the feasibility, you will have to see the financial appraisal also, that is what is the cost of land, what is the cost of plant and machinery, what are the provisions for the contingency, what are the preliminary cost estimation, what are the working capital requirements, what is the cost of production and sales and production estimates. So you will have to do the realistic calculations in advance okay, when the product will be implemented, then in that case whether you will be able to sustain in the long term in terms of the finance part or not. So at least you will have to calculate, and the more realistic the calculations are, perhaps your project appraisal and project planning will be both perhaps realistic and more convincing. So market analysis, technical analysis and financial analysis is quite important from this perspective. And then one has to develop the functional plan also. Functional plan in terms of production and operation plans, marketing plans, HR plans and the financial plans. So all the plans will be prepared in advance. ये सारी जो चीजें हैं कब कर रहे हैं? When you have not yet started the actual production or operations, number one. And in case of the existing business, if you are having some new expansion and diversification program, even in that case, you will have to analyze all these data and information in a very realistic manner. And in that context, what is important here is marketing plan will have to develop in advance in terms of the 4 P's. And these 4 P's include what? 4 P's? What are the 4 P's of marketing? Price is one. Product is one, yes, product. What the product is, that is the first P. Second, yes. Customer to see हो गया. Publicity को हम रखते हैं promotion में. Promotion, product, promotion. Third P, price. And the fourth P is physical distribution, that is distribution network. तो हमें देखना होगा कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, वो प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्रमोशन के बारे में और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारी क्या रहेगी. What will be our strategy? That has to be decided well in advance. That is your marketing plan. Then obviously the production or operation plans are important. That is what will be your total production. You will have to decide आपका प्लांट का आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ होगा, उसका लेआउट किस प्रकार का होगा. Then you will have to see the cost part also of the machines, equipment, plants, etc. कौन लोग उसे सप्लाई करेंगे, who will be the distributors or manufacturer of these equipments, from where you will be procuring them, quality management के लिए आपकी strategy क्या होगी. इसी प्रकार से you have to see that आपकी जो capability और capacity production की होगी कितनी होगी, इसके बारे में calculation सारा advance में होना चाहिए. That is referred as production planning and control. And of course it has not yet started,
But here we believe that whatever your projections are, whatever your plans are, you will be implementing accordingly, and it will provide you an overview or a realistic picture about the future implementation of your plans and projects. And then you will have to develop the operational plan also. What will be the form of ownership? That is to be decided in advance, particularly in case of new venture. Is it the एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय का स्वामी होगा, या साझेदारी के फॉर्म में हम उसको स्टार्ट करेंगे, या कंपनी होगी, या इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनी ट्रस्ट और सोसाइटी? दैट इज टू बी डिसाइडेड. हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस प्रकार का होगा? क्या हम सारी चीजें सेंट्रलाइज करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे? दैट इज टू बी डिसाइडेड. एंड फाइनली यू हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से ऐसे नियम और नीतियां ऑर्गेनाइजेशन की होगी जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक प्रकार से कार्य कर सकें. इट मीन्स दैट विल हैव टू सी द ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल प्लान्स आल्सो इन एडवांस. एंड देन फाइनेंशियल प्लान्स आर टू बी डेवलप्ड इन एडवांस. अगेन हमने जो बात की थी, वेरी स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्लान शुड बी देयर. दैट इज व्हाट विल द कॉस्ट, देन कैश फ्लो अगले 5 साल में किस प्रकार से होगा, प्रोबेबल एक्सपेंडिचर हमारे कौन से होंगे, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा. दैट इज वो कौन सी स्थिति होगी जहाँ की प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे, हम कितने समय में अपने उस लेवल पे आ पाएंगे जहाँ हम अपने लॉसेस को और प्रॉफिट को बराबर कर पाएं, और हमारी जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो अगले 3 साल या 5 साल में किस प्रकार का होगा. दैट इज टू बी डिसाइडेड वेल इन एडवांस. एंड देन आफ्टर दिस यू विल हैव टू डिसाइड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लान. हमारे संस्थान में जो लोग कार्य करेंगे उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो किस प्रकार का होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट किस प्रकार का होगा, एंड फाइनली कंपनसेशन या वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा. दैट इज टू बी डिसाइडेड. सो व्हाट यू फाइंड, लगभग वो सारी चीजें जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे उसको हम पहले से हम प्रोजेक्ट करते हैं. इट इज जस्ट ए मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जो कि हम ऑन पेपर्स कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो कार्यकलाप होंगे वो होंगे. ऑफ कोर्स देयर माइट बी सिचुएशन विच इज अनफोर्सेनेबल, देयर माइट बी सिचुएशन वेयर वी मे डेविएट फ्रॉम ऑल दिस प्लान, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है. कुछ कंटिजेंसीज को, कुछ रिस्क को हम ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जितना हमारा प्लान रियलिस्टिक होगा परहैप्स हम अपने रिस्क को भी कैलकुलेट कर पाएंगे और हम अपने स्टेक होल्डर्स को भी अपने प्लान और प्रपोजल के बारे में ठीक प्रकार से कन्विंस कर पाएंगे. और साथ ही साथ व्हेन वी प्रिपेयर अवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जो कि अगली स्टेज है, उनमें भी सारे कैलकुलेशन एस्टिमेट को हम ठीक प्रकार से प्रेजेंट कर पाएंगे. और साथ ही साथ हम अपने जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लैंडर्स हैं उनको भी ठीक प्रकार से सेटिस्फाई कर पाएंगे. And then the next stage will be on the basis of the calculation that we have done. Now we can decide our project report. Normally, whenever you will be approaching, as already mentioned, for finances, whether short term, long term, whether it is the financial institution or the banks, they will always ask for the project proposal or बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन. तो आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो सारा इन्हीं कैलकुलेशंस पर जो कि हमने बिजनेस प्लान्स में रेट किए हैं, ऑन दैट बेसिस यू विल बी प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन डिटेल. नाउ इन ऑर्डर टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स who can provide you the estimate and they can develop a project report on the basis of the estimates that you have given to them. So that is the 6th stage, and last stage will be here, that is evaluation,
review and control. Periodically, when you start implementing your plan, then you will have to evaluate it on the regular basis कि जो आपने estimate किए थे, आप उन estimate के कितना करीब हैं. यदि उसके करीब नहीं है या कुछ situation बदल गई है, accordingly you can revise your calculation and estimates also. But here the question is, what you will revise unless you have certain data or figure which you have already estimated. So evaluate, plan, और साथ ही एक कोशिश की जाए कि whatever the projections have been made, accordingly you will try to keep the realistic or the real implementation just according to your plan and project. So that is referred as evaluation, review and control. So these are the important aspects of any business plan. In fact, when you prepare it in a form of a report or presentation, start with the first aspect, that is referred as timeline, company का नाम, entrepreneur का नाम, date on which the business plan was prepared, and the detailed contact and address, that is referred as timeline. You will have to develop the executive summary. अगर कोई पूरी रिपोर्ट ना पढ़ना चाहे तो एक समराइज फॉर्म में सारे कैलकुलेशन, सारे एस्टिमेट हमें 2-3 पेज में देने होंगे, और उसके बाद जैसा हम यहाँ देख रहे हैं लगभग वो सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस प्लान के अंतर्गत इंक्लूड करनी होगी, एंड दैट कैन ऑलवेज बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट. नाउ हियर there are certain problems, certain limitations, certain constraints which we must keep into consideration while developing the business plan, report or presentation or preparation. So what these limitations are? एक मिनट पहले, उसके पहले when you are presenting it, what you find? The first one is the cover sheet. Number 2, that is table of content, what you have included. The third, as already mentioned, the summary, executive summary. Part 1 of the business plan will be the organization plan, marketing plan, financial planning, and finally the supporting document. Whether it is a project report or a business plan, you will have to include, you will have to calculate all these, and you will have to present your business plan in the same form or format. So I was just mentioning about the limitations or constraints or certain points which must be kept into consideration while developing a business plan. The first one is, business plan should be prepared in a very professional manner, and that's why what is important is that whether it is the format of the plan, whether it is a printed report, it should be very neat, clean, perfectly typed and presented in a beautiful manner. So it should not be presented in a form of a rough copy. यदि बहुत है आपने crude way में अगर से present कर दिया है, in that case आपके stakeholders उससे प्रभावित नहीं होंगे. So the first important point is that it should not be in the form of a rough copy, but it should be in a very professional way. It should be presented. Secondly, जब आप calculations कर रहे हैं, whether it is financial or marketing or production or operation, it must be as realistic as possible. That is important. Otherwise, जिस उद्देश्य के लिए आपने business plan develop किया है, it will be completely defeated. So, जब आप कोई चीज उसमें लिख रहे हैं, you must have a justificable reason that why you have calculated it. Try to keep it as realistic as possible. You must have a logical ground to present data, information, facts, etc. यदि आपने outdated या historical fact or information आपने दी है, वर्तमान स्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है,
it will not be realistic and it will defeat the very purpose of the business plan. The third important thing is that यदि आपने जो assume किया है, आपके जो prediction है वही completely unrealistic है, बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया है या ऐसे जो कि realistic लगते ही नहीं है, in that case perhaps it will not be worthwhile or trustworthy. तो ना तो आपका underestimate होना चाहिए ना overestimate होना चाहिए. It means that it must be as realistic as possible. And then what is important is that even if you have taken help of some experts, some consultants, some chartered accountant, at least as an entrepreneur, you must be aware about the financial projection, because lending institution may always ask about the data, about your calculation. तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई भी गई है बाहर से, तो भी आपको उसके बारे में जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो एनालिसिस है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप अपने स्टेक होल्डर्स को ठीक प्रकार से कन्विंस कर सकें. एंड फाइनली वी कैन से दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी शुड give the projections in a manner where हमने very purpose of the business